I'm sure that there's no single human being left in this country who doesn't know about the Cockroach Janata Party or the new era of cockroaches, I say. They might not know about the three organs of democracy, but they'll surely give you an example of why the Cockroach Janata Party is mandatory. These cockroaches are, as usual, causing diseases or intellect damage, to be more concise. There were so many topics like the Arjikar case, Twisha Sharma case, NEET paper leak, CBSE paper checking scam. But out of the whole pool, they extracted a particular line from the CGI statement that referred to the unemployed youth as cockroaches, insects. And I want to support the CGI here because he was wrong. Sitting on such a big position and saying something like this is a blunder. But my question is, was it the most heated topic to be discussed, or was it just the most heated propaganda that could arrest the attention of the Gen Zs, that could make some people gain fame? एंड आयरनी ये है कि यहाँ के यूथ को लगता है कि जो लोग सच में अमेरिका में बैठ के एक पार्टी बना रहे हैं सरकाजम भरी, वो इनके फेवर में आएंगे. ग्राउंड रियलिटी बताए तो जो असली एस्पिरेंट्स हैं, नीट एस्पिरेंट्स, जो असली विक्टिम हैं, वो इस पार्टी के बारे में जानते भी नहीं होंगे. शायद जानते होंगे लेकिन इस पार्टी को सपोर्ट कभी नहीं करेंगे क्योंकि उनको रियलिटी पता है. असली सपोर्टर इस पार्टी के हैं स्कूल गोइंग किड्स वन ग्रेड 6, 7 और 8, एंड दे आर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी. I think the party has forget about the universal adult franchise, whatever. But the point is, सोनम वांगचुक जो उतने दिन से इंडिया में रहकर सब कुछ एंड्योर कर रहे हैं, जितना भी पेन उनको दिया जा रहा है, जितना टॉर्चर किया जा रहा है, वो सब सह रहे हैं इस यूथ के डेवलपमेंट के लिए, इस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. यूथ उनको उतना सपोर्ट नहीं कर पाया उतने सालों में जितना आज वो 3-4 दिनों में बनी कॉकरोच जनता पार्टी को कर रहा है. लेट मी टेल यू दैट कॉकरोच जनता पार्टी हैज क्रॉस्ड ओवर करोड़ followers on Instagram, and Sonam Wangchuk is still stuck on 1.9 million followers. You can see the difference. And आप खुद बताइए, अभिजीत दिपके और सोनम वांगचुक में से किसने ज़्यादा काम किया आपके लिए? आपको सच में लगता है कि अभिजीत दिपके आपके लिए बोलने आएगा? और इस कंट्री में जो यूथ के बीच में ट्रेंड है कि मोदी हेटर या बीजेपी हेटर होने से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो अपने आप साफ हो जाता है. लाइक यू गेन एन एलिजिबिलिटी टू फॉर्म अ पार्टी जस्ट बीइंग अ मोदी हेटर और बीजेपी हेटर. If he was actually concerned, he should have stood up by his own ideology, by his own propaganda. But he has been a constant Modi hater and AAP supporter. We need an independent political party, not a joke, okay? Plus, this party is gaining support from a TMC leader who defended the Arjikar case. To add on, educators like Digraj sir, the social studies teacher, who is the most popular teacher, I guess, among the student between 7th to 10th grade, has uploaded a video in the support of this Cockroach Janata Party. And not only Digraj sir, there are so many creators and influencers like Dr. Rakshita Singh, Shubhankar Mishra, and Dhruv Rathi have also indirectly stood up for this Cockroach Janata Party. Not because they focus on your problems and your issues, but just because it is the most money-centered topic these days. Being a youth myself, I don't blindly support this party and I don't even support BJP, but I'll say that being a BJP hater doesn't mean that you are an ideal person for politics or you have a suitable ideology. So be a bird you can fly, not a cockroach you can kill.